Good afternoon, everyone. We'll start with our usual way of talking a little bit about Nifty on monthly, weekly, and daily, and then we'll take questions. I think one society, sir, I don't know your name. I see your tag on Telegram as society, and here in Hi, uh, my name is Mangesh. मैं ही हूँ Mahesh. Mangesh. Mangesh, okay. So Mangesh sir ने Yeah. questions पूछे थे, so we'll get to that. But prior to Yeah. this, we'll do with this thing. Now, if you look at monthly, I mean, this candle, what to say? It's a proper doji right in the middle. Now, in the coming week, if at all market decides to go to the either end of this doji, then we can have a significantly different view for the upcoming month. But as of now, I don't see market going anywhere. It's exactly in this particular month, it took out the high and low both, like of the previous trading range of the month of like trading range of January. It was pierced on both ends, took out top end also and took out bottom end also. Usually, when this happens, the next time either the top end or the bottom end breaks, it will continue. So till that particular thing happens on monthly, I don't think there is sense in doing swing trading till then. Like we can have strangles and iron condors and all that, but not the proper all-in swing trading where you sell in the money or buy futures or something like that. So we'll wait and watch on monthly. When it comes to weekly again, now this candle there is no significance. It's just a green color. It's not a shooting star because it's not forming on any end of a trend or any beginning of a trend. So this doesn't hold any significance. And this green candle is forming just after the red candle on weekly. So again, no point in discussing here. Nothing much. Until and unless these highs or these lows are not taken out, we'll not be able to comment anything on the direction. So for the time being, I will request all of you, if at all you are good at scalping and you know when to get in or get out, please do that. Once the market settles, it tells you where the direction is next, then we'll again focus on swing. Now, if you come to daily, this more or less is doing something of this sort. It's coming in a downtrending channel. Now, the problem is since it is traveling in a channel, you cannot fully bet it for the downside or you cannot fully bet it on the upside since we are at the bottom end. Now, the peculiar things about channel pattern behavior before it breaks is it will form usually a double bottom like this near the previous swing low. Now, if this is a double bottom and we open, let's say, somewhere near 25,800 or 900, which is right from where the selling happened, and we consolidate here a bit for a day or two, and the next time it breaks from here, then we can eventually consider this as a move and then trade till targets of 26,200 or 300. We can consider two things. First, the breakage of this downward slope, and the second thing is finally the recent swing high is being taken out. So taking that two technical factors into consideration, if at all this high is taken out, we can try a swing move till 26, 200, 300, but not with full quantity again. Let's get out of this range first, and then we'll decide whether to take full quantity swings or not. But till the time Nifty is dilly-dallying in this particular range of 26,300 on top and 25,000 on the bottom, we'll limit our quantity if at all we want to do swing trades, and then we'll focus on intraday rather than positioning. Now this is daily. If you come down to hourly, there is no significant pattern that is being developing here. It's just that channel pattern here also in hourly. You could have said like this will be a sort of head and shoulders if it comes down here, but since we are giving a gap up opening, this pattern is invalidated before it is formed. So no point in discussing that. So for Monday, after this gap up opening somewhere close to these levels of 25, 800, 830, we'll wait for some time before any pattern comes up before trade jumping onto a trade. Off late, what Nifty has done is whenever it gaps up or gaps down, it will try to go in a range pretty quickly. So if that is the case again, Monday there is no point in jumping to take a trade and then giving up stop losses. That was for Monday. Bank Nifty is a pretty different case altogether. There was this report that I saw a while back which says whatever FIIs are buying, like intermittent buyings that we have been seeing, it's all in PSU banks and manufacturing stocks. And they have been constantly removing money from IT, which is pretty evident in how IT has been behaving the past 1 month.
So we'll have to see how long they'll keep on buying PSU banks because they are near about their fair value, I guess. You can see SBI's price to book, and then we'll come to know. So if you see, SBI is already outperforming the sector PE when it comes to the PE parametric, and price to book is close to 2 again now. There is not much of a delta between an SBI's price to book and let's say HDFC's price to book. HDFC price to book is 2.5. So being a private bank versus a state bank, this particular differential between valuations of like only zero point 0.5 price to book is not that significant anymore. So jumping into public sector's bank at this point of time is not advisable. I mean, the rally is already gone. That being said, we discussed a while back that Bank Nifty is trading in this channel and it has continued to do so. I think we discussed this in the month of December or somewhere. So as long as Bank Nifty is in this channel, no point in predicting. Now we are almost at the top end of the channel. If at all it gets rejected from here, again we'll come to the bottom end. I don't see any drastic correction much beyond this wherein it can fall somewhere close to here because all of the PSUs are very strong. So until unless a trend in PSUs change, I don't think there will be any meaningful correction in Bank Nifty. The other component of Bank Nifty is private banks. I mean, private banks, if you are, most of us hold private banks either through mutual funds or in our portfolios. And none of the big private bank has performed in the last 4 5 years. If you see HDFC, Kotak, Axis, they are all pretty much close to the COVID highs that they made in 2020 and 2021. From then on, 5 years have passed, and the absolute return over these 4 years that they have generated is pretty much close to 6 or 7%. So nothing meaningful. I mean, if you expect a correction after such an underperformance, that is also not a wise thing. So Bank Nifty, as long as it is creeping up in this channel, we will let it be. There is no significant move that I'm expecting here. Now, after this gap, if Nifty is gapping up with 300, Bank Nifty will probably gap up with 650, 700, which again will take to 61,700 odd, which was the high this week that it made when it gapped and then eventually retraced. So if at all on Monday we gap up and then straight away cross this, then we can expect a rally in Bank Nifty. But the only problem I see is this channel. I mean, upward trending channel, it's very rare that a index will break it on the upside in an upward trending channel. There might be a scenario wherein it will give us a sort of a breakout and then retrace and then fall to the lower end of the channel. So that is also one possibility in Bank Nifty. We'll see this week. That particular retracement and reversal, it will take a couple of days. So it's not something that it will open Monday, gap up, and then eventually immediately fall right on Monday. No, it won't happen that way. Let's just wait and watch if there is a reversal from this particular price point. Uh, Daily also, it's a clutter here. Selling retracement closed above the 50% previous days of fall, which is again a bullish indicator. Now it is gapping up. Now after Monday, we'll have to see whether it will again cover the gap or continue. That was for Bank Nifty. Gold and silver, I think you guys already know. After this news of US Supreme Court saying tariffs are not valid, gold and silver both spiked. That coupled with US Iran news, which says there is an strike, imminent strike that is going to happen, both of them went up this week just because of those news. That's it. Bitcoin is hovering around the same place for quite some time. Everybody is thinking it will be a base formation here, but I don't think this is a base formation. This is again accumulation before it eventually kicks out and then retraces. Probably 58 or 57,000 is the place where it will come down till and then retrace again. That the worrying thing is this. This is US oil, but if you see Brent is somewhere close to 72 already. So if you see this. Yeah, it's 71.15, which is at a very, how do I put it? Like this going up is not a good indication for a country like us whose foreign exchange reserves depend on import bills a lot. If this keeps on going up, it will be a problem. The trajectory of our foreign reserves so far have been on the increasing trend, but if crude starts to behave abruptly, then that will be impacted.
And this is the only indicator, I believe, when it comes to geopolitics. Whenever, due to geopolitics, we expect market to react, then the prenomination is always given by crude oil. If at all crude oil is spiking and it is not coming down, that means there is a nasty event that is going to occur in the near future. So we'll keep an eye on this. If at all it doesn't come down, we'll expect markets to reverse instead of breaking out high and then rallying on the higher side. So for the upcoming future, if you just look at the technical charts of Nifty, there is no indication as such whether it will go up or go down. All the geopolitical events are on the horizon, and the precious metals and US crude oil, they are showing that there is uncertainty in the market and there is an event about to happen. So until unless we have very clear picture with respect to data and the technical trend, we will not venture into long trades. Whatever long trades we'll do only for intraday. And if at all in an intraday trade that you have taken, you have holding a good amount of profit like 100 or 150 points, then we can think of carryover, but otherwise, so that has been regarding Nifty index and all that. Now, shall we jump to questions or shall we, if anybody wants to discuss anything other than this on the charts? सर मंडे को गैप अप इज सर्टन आई मीन ये ट्रम्प तो कुछ भी बोल रहा है राइट आई मीन इट्स Yeah. लाइक एन प्लस ईरान वाला No, स्टिल लूमिंग why the gap up is looking a bit sustainable is although Nasdaq retraced most of its gain towards the end of the day, Nasdaq and Dow and all those fellows, Gift Nifty didn't fall. That was a surprising thing. You say this after this, Nasdaq retraced all of its gains intraday, and then it eventually ended up close to day high. But if you see Gift Nifty, it kept on going high. So नहीं मतलब ये वैसे भी टैरिफ इम्पैक्ट्स अपना इन आई मीन इंडिया को वेरी लेस राइट 18% से 10% तो बोल रहा है ना अब that 10% again, I'm not sure because a couple of different outlets are interpreting it differently. Now, somebody says instead of the blanket, instead of the trade deal tariffs that have been agreed upon between different countries, this 10% is a blanket tariff on all the countries. या या But some of the outlets are saying 10% tariff is over and above what has been agreed in the trade deal. नहीं नहीं सो आई मीन हाँ इवन आई रेड इट तो हाँ, द ब्लैंकेट जो सुप्रीम कोर्ट ने शॉट डाउन किया है दैट वाज अंडर डिफरेंट रूल वो आई क्या क्या ही डिड इट राइट IAPA. Yeah, हाँ आईएपीए बट yes, दैट इज शॉट डाउन बट yes. 10% ही इज लाइक ब्लैंकेट फॉर एवरीवन एल्स That is what. तो So the 10% blanket is over and above the agreed deal rate, or it's in lieu of that agreed deal rate is what the clarity is नहीं there. वो डील तो गया ना फिर सुप्रीम कोर्ट ने शॉट डाउन कर दिया तो वो डील तो नहीं नहीं, सुप्रीम Supreme- कोर्ट ने शॉट डाउन ये किया है कि he cannot unilaterally impose any tariffs, not the deal ones. अच्छा Deals are वो still in अच्छा place. वी हैव अग्रीड ऑन डील में 18% वो ये तो हाँ, नो नो we haven't signed the deal ना, we हाँ, just we haven't agreed. signed the अभी deal. मीटिंग होगा उसके बाद में वो होगा. डील Tomorrow, साइन नहीं हुआ है अब तक. yeah, tomorrow Indian delegation is supposed to go to US for signing the preliminary draft. So after the US Supreme Court order on Friday, we'll have to see whether our delegation is actually going tomorrow or not. So, वही है, I ये mean, पक्का ईरान पे कुछ कर देगा देखना अब फिर देन टू So डाइवर्ट अटेंशन on the face of it, there are multiple angles and multiple things to consider. Just when it comes to tariffs, it's not so clear that whether Supreme Court has said anything about. Yeah, there are two other things also. Supreme Court did not tell anything about refunding whatever he has collected so far. So if that is the case, then the gone market because that will straight away uh, have an outflow of somewhere close to 34 or 35 billion dollars, all countries put together. So नहीं, 900 बिलियन का बोला था उसने, तो 900 बिलियन का बिजनेस किया है हम लोगों ने 900 billion टैरिफ का. business, 900 billion business kiya, but the tariffs that he got was 35 or हाँ, 36 billion. यस यस यस. So Supreme Court didn't, I mean, comment anything on the tariffs that he has collected already. So that is again a wait and watch. And what they have said is under that particular emergency act which Trump used for imposing tariffs, under that act, what Supreme Court said is he cannot unilaterally decide. He'll have to take permission of Congress. So that unilateral tariffs that Trump said was is done away with. But whatever trade deals are in place, they are in place. They cannot be changed. That was one.
एंड जहाँ तक मैंने मतलब जैसे बोला सर ने कि जैसे हम लोगों के ऊपर 18% है और उसके ऊपर 10, ऐसे मतलब मैंने नहीं पढ़ा, मैंने जहाँ तक पढ़ा है वो फ्लैट 10% सबके लिए है अभी। हाँ तो हाँ अभी डील एग्जैक्टली। वालों का अलग से है, वो पता नहीं। वही। बट 18% के ऊपर नहीं है, वो फ्लैट अभी 10% पे आ जाएगा, मतलब इंडियन को 3% ही लगेगा ऐसा है। यस। बट आई माइट बी रॉन्ग, बट ऐसा मैंने पढ़ा तो वही था। यस। So now that this is done, shall we take those questions then? आपने जो पूछा मंगेश जी. यस यस। Okay. So the first question you asked was how do you select premiums for selling, even hedge? So my thing is only Monday and Tuesday I will take premiums which are close to ATM, probably 100 points away, because आपका DK जल्दी होता है, Tuesday being an expiry. But if it is Wednesday, Thursday, Friday, usually I'll have 200 points, 150 to 200 points distance between ATM and the strike that I'm selling. Now, why particularly that? Because I want to capture the move like future. I mean, I trade like synthetic futures. Like if one point is moving on index, I want that one point to be captured in my trade. So if you want to treat options as synthetic futures, then you will have to go as in the money as possible because your deltas will be high and whatever moves you are looking on the index, straight away those will be translated into options. That is the reason that I take 150, 200 points in the money options for selling. And hedge, I mean, if at all, if I have enough margin, I'll take the farthest possible hedge. Because if you remember in the podcast that I had spoken about a year back, I used to tell like 15, 20 rupees is the range where my hedge should be. Because that यस। usually gives you an indication whether it is going to trend or go sideways. Now those calculations are out. From the time राइट। margins have increased and from the time lot sizes have changed, out of the money options are not behaving like the previous 1 year or so they used to behave. So if I am not getting any indication from those options, now I have moved away. I try to use the maximum possible margin that I have, and I try to take at the maximum possible distance. Normally, it is 1,000 to 1,200 points away. Like if my in the money option sell that I have taken, let's say I have sold put, let's say I have sold this put 25,800 put. So my hedge is usually 24,800 or 24,600, somewhere like that, just for the margin benefit, nothing else. ओके। That was one. Then the second thing is you asked the target depends upon the premium. No. Like for scalp, I usually have a predetermined zone on the spot chart. Whenever it comes to the spot chart, whatever may be the profit or loss, I take it and get out. So it depend. Target doesn't depend on the premium. लाइक द क्वेश्चन वाज लाइक जैसे फॉर एग्जांपल आपने 100 का प्रीमियम बेचा है, Okay. तो फॉर दैट डीके विल बी थोड़ा सा लेस ना, मतलब कि उसमें नहीं, फ्लक्चुएशन ज्यादा इसलिए नहीं होंगे इसलिए मैं कंपेयर आपको टू इन द मनी। हाँ, इसलिए मैंने आपको बोला ना कि मैं 100 मतलब हम 100 मेरे मैं जो ऑप्शन बेचता हूँ वो 100 के होते ही नहीं है। मैं जो ऑप्शन बेचता हूँ नॉर्मली वो 250 260 वो प्राइस के होते हैं जो जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है अभी। यस। So in that case it doesn't matter because 100 का आप बेचोगे आपका डेल्टा ही 0.3 or point, if you are selling a premium worth 100 that means you are selling OTM, it's not even ITM. At any given day ITM is like 140 or 150 and that's not, sorry, not ITM, ATM. ATM is like 140 or 150 and if you go to OTM you'll get 180 60 and all those prices. So if you are selling it at 100 and you are expecting to capture all the 30 point scalp that you are trying to have, delta itself is zero point 0.4 or zero point 0.3. So zero point 0.3 into 30, you'll only get 10 12 points premium here. And out of those 10 12, 1 or 2 points will be taken away by the hedge. यस ऑब्वियसली। So OTM करके कोई फायदा नहीं है. I never do OTM. ओके। तो नॉर्मली आपका निफ्टी में मतलब ट्यूसडे और थर्सडे छोड़ के ऐसे 200 250 के अराउंड ही प्रीमियम सेल मंडे होता एंड है। ट्यूसडे को छोड़ के, मंडे एंड ट्यूसडे को छोड़ के बाकी दिन 230 250 वही ओके रेंज. ओके Monday and Tuesday why I ओके। take very close to ATM is because DK will play a lot of DK will have a lot of importance on Monday and Tuesday. क्योंकि ट्यूसडे को ओके एक्सपायर होना ही है तो मंडे ट्यूसडे जितना भी होता है सब जल्दी जल्दी गल जाता है. So if at all you take and it goes in your direction, you will get bit more than usual. ओके। Then the third question is how do you avoid instant entry? Like you take trade and your stop loss got hit, then it's again going in your direction. Do you take the entry? No, I don't. Till my all conditions are met as per whatever scalp that I do, I don't. Like you would have seen that in the last week also. On Thursday it trended. It
took my stop loss and then I have not traded again because that particular day I was thinking it is going to reverse, it is going to reverse from the support, but it was not reversing at all. So I didn't venture. yes, I just let it go, accepted the stop loss and closed. I was not expecting that sort of a fall on Thursday. And that fall on Thursday was purely to kick out longs based on how the market reacted on Friday and how it is gapping up on Monday. There was no institutional selling on mm, Thursday. There was nothing wrong with the option chain data that we had. Still, we had a one-way trending fall on Thursday. That's very rare. yeah. कुछ मतलब उसने ईएमएस को मतलब वैसे एक्सपायरीज को ईएमएस को ये नहीं करता, बट ईएमएस भी उसने कुछ ये नहीं कुछ किया, नहीं किया डेली वो। वाला भी नहीं किया, कुछ एग्जैक्टली, कुछ कुछ रिस्क नहीं उसने। किया, कुछ नहीं किया। मतलब उसको जस्ट ऐसा था कि गिराना ही है, कुछ भी हो जाए, मतलब निकालना ही है सब लॉन्ग को, ऐसा था वो। एंड दैट आल्सो कि उसमें कुछ एफआईएस और ये कुछ भी सेलिंग नहीं था। हाँ, सिर्फ थोड़ा सा सर ये था कि कॉल ऑप्शंस उतना डीके नहीं हुए हैं, बट फिर वो थर्सडे था तो इसलिए इतना अर्ली था, हाँ। बट या Then what is the next question? How do you trail your stop loss? Is it point based or swing based? सर अगर डायरेक्शन होता है तो इट इज ऑलवेज स्विंग बेस्ड, आई डोंट लुक एट पॉइंट्स। ओके, बट आजकल तो वो डायरेक्शनल पकड़ में ही नहीं आ रहा है, तो इट्स ऑलवेज, अभी जैसे ही मैं ट्रेड एंटर कर लेता हूँ मेरा ऑलरेडी सेट होता ही होता है टारगेट, लाइक लेट्स से 255 पे मैंने पी शॉट किया है एंड देन आई माय टारगेट सेज on the spot if it is like decaying 35 or 36 points 35 or 36 points in the direction that I am planning, then my usually target would be at 222 221 में लगा के छोड़ देता हूँ, ओके, so it will come out. if ओके, if I expect something on the daily chart that यहाँ से ब्रेकआउट होने वाला है या यहाँ से ट्रेंड होने वाला है, देन आई ट्रेड एंड इट इज गोइंग इन माई डायरेक्शन, देन तो मैं वो स्विंग वाला फॉलो करता हूँ, अदरवाइज नो। अभी लास्ट एक दो क्वार्टर में वो स्विंग वाला फॉलो हुआ नहीं है, लास्ट मेरा वो मेरे ख्याल से जुलाई में या जून में था, उसके बाद कभी नहीं आया। ओके, अभी एक बार ट्राई करने की कोशिश की, वो ट्रेल स्टॉप लॉस लेके चला गया, आपको बोला भी था मैंने, मेरे ख्याल से ग्रुप में मैंने एक बार बोला यस, भी था, ट्रेल स्टॉप लॉस लेके चला गया उस दिन। यस बोला था अभी। हाँ अभी तो कल कल भी एक हुआ था आपका शायद से ट्रेलिंग वाले। नहीं, कल वाला तो प्रॉपर स्टॉप लॉस है, वो ट्रेल स्टॉप लॉस नहीं, ट्रेलिंग वाला तो उस दिन हुआ था। 16th को मार्केट नीचे से सपोर्ट मार के ऊपर गया था, देन 17th आई वाज एक्सपेक्टिंग इट टू कंटिन्यू द ट्रेंड, तो मैं डाल के बैठ गया था एंड देन प्रीवियस स्विंग के नीचे मैंने स्टॉप लॉस डाला था जो लेके गया वो। ओके, ओके। सर न्यूबीज के लिए आप कौन सा मतलब प्रीमियम सजेस्ट करेंगे? आपके जितना इन द मनी जाना चाहिए, मतलब जो सेलिंग में अभी भी आए हैं। नहीं सर, नहीं नहीं, इन द मनी स्ट्रेट आप जाओगे वो स्विंग्स नहीं संभाले जाएंगे। आप थोड़ा सा एट द मनी या स्लाइट ओटीएम लेके कर लो, जब तक आपको फील नहीं आता है कि कैसे एंट्री करना है, कैसे एग्जिट करना है, बिहेव कैसे करता है हम्म, प्रीमियम। वंस यू गेट द हैंग ऑफ इट, आपका एक्यूरेसी इंप्रूव हो गया तो आप इन द मनी में आ जाओ, तब तक नहीं। ओके, ओके। तो निफ्टी का 140-50 तक ठीक है मतलब। हाँ, यस। मैं यहाँ पे बोल रहा था, अभी ये मंडे को उसने वन वे अपवर्ड मूव किया था, तो ट्यूसडे आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस टू कंटिन्यू, एक बार यहाँ पे आके जितने भी वीक बायर्स थे निकाल देगा फिर जाएगा करके, आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस, सो आई एंटर्ड समवेयर हियर एंड देन हम्म, एट दिस पर्टिकुलर स्विंग आई हैव केप्ट माय स्टॉप लॉस समवेयर हियर। ये दो तीन कैंडल का जो ब्रेकआउट आया था, तो ये अब नीचे आया, यहाँ पे लेके गया, मेरे ट्रेल में स्टॉप लॉस लेके चला गया। Even then, I had captured this much move, like from 615 to somewhere close to 648, so 36, 37 points, तो फिर भी आ गए थे। Then I left it, फिर I didn't do anything on that day। फिर ऐसे में रिग्रेट नहीं होता है मतलब इतना आ गया नहीं, था? ऐसा नहीं होता, दोबारा आता ही आता है ट्रेड, वो ऐसा तो नहीं है कि ये लास्ट या अच्छा, फर्स्ट ट्रेड है, दोबारा मिलेगा ही मिलेगा आपको ट्रेड। ओके। हाँ, वो देन तो है कि अगर इनकेस चल गया तो बहुत ज्यादा ही देके जाएगा वो एग्जैक्टली, ऑब्वियसली। नहीं मेरा मेजर मोटिव ये रहता है कि ओवर ट्रेडिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जो सोमू सर के हुए थे कल, वैसा हाँ, मेरा बहुत बार हुआ है। इट्स नॉट समथिंग कि नहीं होता है, इनिशियल डेज में मेरा ऐसा बहुत बार हुआ है कि एक दो दिन में ही पूरा महीने भर का खत्म। नहीं सर, वो सोमू सर का प्रॉब्लम नहीं हो सकता ही, मेरा भी मतलब वैसे ही होता है कि अगर मतलब 2-3 स्टॉप लॉस हिट हो गए तो साइकोलॉजी थोड़ा हिल जाता है। हाँ, देन वी ट्राई टू वर्ट इट। अभी इनिशियल फेज में तो वो प्रॉब्लम यही, यस बट तो आपका थोड़ा भी मतलब ये है तो। हाँ, तो इसलिए आई मीन मेरा फर्स्ट दिमाग में यही चलता है कि ओवर ट्रेड मत करो, गया तो गया पैसा, फिर कल और देखते हैं, बट आई यूजुअली अवॉइड ओवर ट्रेडिंग। देन द तो नेक्स्ट थिंग 3 इज, ट्रेड वाला डेली का वो अच्छा है रूल सर, मतलब उसमें ये भी नहीं लगता कि कम ट्रेड है, बट ये हाँ भी नहीं होता कि ज्यादा ट्रेड।
हाँ, अभी 3 ट्रेड भी कहाँ हो रहा है लास्ट 1 डेढ़ महीने में, तो मेरे ख्याल से 1 या 2 दिन ही होगा जब मैंने 2 ट्रेड भी किए हो। नॉर्मली एक ही ट्रेड तो में मैं बंद करता हूँ, या तो अंदर या तो बाहर, अनलेस एंड अनटिल दूसरा ट्रेड एकदम कंपेलिंग हो। हम्म। एंड देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, डू यू फॉलो सेम व्हाट आरआर इज एवरी डे एंड व्हाट इज इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स? आरआर तो सेम होता है, बट दैट इज डिपेंडिंग ऑन वेयर योर टारगेट एंड हाउ मच इज योर स्टॉप लॉस। इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स तो वो कांस्टेंट नहीं होता, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। लाइक कल का ट्रेड व्हाट आई डिड वाज, अगेन सिंपल पीओसी वाला स्कैल्प है वो। आप ये फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल देखोगे, पीओसी जंप्ड राइट फ्रॉम ईयर टू ईयर एंड इट स्टार्टेड रिजेक्टिंग, so I entered somewhere close to here and exited somewhere close to here. When I saw that this candle's low and this candle's low is same and it is coming back very vigorously, I exited somewhere close to here. So 34 35 points वो भी मिल गया था। And after that I didn't trade at all। वो ऊपर जाता ही रहा, but I didn't trade। I was again expecting a trend continuation। इतना बड़ा रेड कैंडल के बाद अगर आप यहाँ पे कूदोगे और सोचोगे ऊपर जाएगा, then that is something which is not very often। Like it is very rare कि एक बड़ा कैंडल आया तुरंत अगले दिन ऐसा वी रिकवरी टाइप हो गया। ओके, सो इट्स नॉट पॉइंट बेस्ड, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अभी 35 नहीं, 30 पॉइंट पॉइंट्स बेस्ड नहीं। आपका। हाँ, पॉइंट बेस्ड नहीं। हाँ, जैसे मैंने यहाँ पे एंट्री किया तो कायदे से मेरा स्टॉप लॉस ये स्विंग के ऊपर यहाँ होना चाहिए। तो लेट्स से यस यस। 451 मेरा स्टॉप लॉस यहाँ था, 483, तो दैट वाज समवेयर क्लोज टू व्हाट 32 पॉइंट्स। 30। उसके अगेंस्ट 452 आई एग्जिटेड हियर 390, समवेयर क्लोज टू 60, सो 1.8 1.9 वैसा रेशियो था रिस्क अच्छा, टू रिवॉर्ड। तो इट डिफर्स, मतलब कि ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, बस 1:1 के ऊपर जो वन इज जैसे हाँ, ले जाओ। 1:2 के आसपास तो रहता ही है, 1:2 और 1:2 समवेयर क्लोज टू। ओके ओके। तो अब फिर दोबारा आपने पूछा व्हाट्स योर करंट स्ट्रेटजी। अभी तो स्कैल्पिंग है और कुछ नहीं है। आई जस्ट वेट फॉर सेटअप्स। मेरा आजकल स्कैल्प सेटअप्स आई डोंट डू दोस यूजुअल वंस की हेड एंड शोल्डर हो गया या राइजिंग वेज या फॉलिंग वेज। आई एम नॉर्मली डूइंग विथ रिस्पेक्ट टू दिस। तो मैं 3 4 पैरामीटर्स देखता हूँ। वन इज 5 मिनट्स का ये स्टोकास्टिक्स, 15 मिनट्स का स्टोकास्टिक्स, देन कॉल एंड पुट जो भी आप डायरेक्शन में देख रहे हो उसके स्टोकास्टिक्स। If at all those three align and those three are turning at the same time, usually you will get a good trade। 15 20 पॉइंट का मिल जाता है। If they are not aligning, then I let them go। तो ओके बेसिकली वो एक स्ट्रेटजी है। एंड देन डिफाइंड लेवल्स जो मैं सुबह मॉर्निंग में बोलता हूँ कि ये लेवल से शायद सपोर्ट लेगा और ये लेवल से शायद रिजेक्शन लेगा। अगर वैसे लेवल्स में आके सपोर्ट या रिजेक्शन ले रहा है, देन वहां पे मैं स्कैल्प करता हूँ। ओके। अदर देन दैट नथिंग मच, जस्ट दिस स्टोकेस्टिक्स वो भी 30 40 पॉइंट्स का ही रहेगा स्कैल्पिंग 30 40 पॉइंट्स। मतलब, लाइक इन दिनों में, मतलब हाँ, क्योंकि मार्केट इतना मूव नहीं कर यस। ओनली थिंग इज वो लेवल से अगर मार्केट एकदम वायलेंटली मूव कर रहा है कि एक कैंडल ही बड़ा 40 50 पॉइंट का बना रहा है, देन आई विल वेट, अदरवाइज तो गेट आउट। रहा। ओके ओके। Those are the questions। Anything else anybody wants to ask? जी सर, मुझे पूछना है। Yes sir। अब मैं बोल रहा था कि कल जो मेरा ओवर ट्रेडिंग हुआ था, मैं सोमू बोल रहा हूँ। Oh, okay। मेरा जो ओवर ट्रेडिंग हुआ था कल, हाँ, मैं 2 महीने से डिसिप्लिन से काम कर रहा था, प्रॉफिटेबल भी था। और सर मैं कल पिछले एक ही दिन में। पिछले 4 दिन से आपको बोल रहा था आप लिमिट्स कर लो, ट्रेड स्टॉप लॉस रखो, जी, बंद कर दो, आप सुन ही नहीं रहे हो। वो सर मेरा थोड़ा साइकोलॉजी इशू आ गया था, मैं हैंडल नहीं कर पाया कल। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ सर। आप जब सुबह आपने बताया भी था कि नो लॉस नो प्रॉफिट में ऑलमोस्ट आप आ गए थे, तो मुझे लगा उसके हाँ बाद आप बंद कर दोगे। बट एंड ऑफ द डे आपने इतना बड़ा ट्रेड लिस्ट दिखा दिया। हाँ, वही तो सर, वो साइकिल एक्चुअली क्या है, 3 4 दिन से मेरा कंटिन्यूअसली स्टॉप लॉस जा रहा था। और कल जो हुआ, कल मेरा मॉर्निंग में ही 20,000 का प्रॉफिट दे रहा था, वो 2 रेड कैंडल बना था, हम्म। तभी दे रहा था 20,000 का प्रॉफिट। लेकिन उसके बाद जो एक ही बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बना ना, पूरा हम्म। प्रॉफिट रिवर्स होकर माइनस में आ गया, तो वो मैं हैंडल नहीं कर पाया, तभी हाँ, हो गया मेरा साइकोलॉजी खराब। मेरा भी वही ट्रेड था सर, लेकिन मैं निकल गया, आप निकले नहीं, बस वही है। मुझे मेरा भी प्रॉफिट दे रहा था हाँ, मेरा अच्छा भी वो खासा। 2 ट्रेड में ही प्रॉफिट, मतलब वो 2 रेड कैंडल जो बना था रिवर्स हो गया, उसी में मेरा भी प्रॉफिट है, बट मैं लेके निकल गया हूँ 35 36 पॉइंट। मैं निकल नहीं पाया एक्चुअली, मुझे अच्छा हाँ। खासा प्रॉफिट दे रहा था, वो रिवर्स हो गया और एकदम एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल जो बना उसमें पूरा ही लॉस हो गया था। हम्म।
लिमिट से ज्यादा लॉस हो गया था, तो इसलिए मेरा साइकोलॉजी खराब हो गया कल। सर स्टॉप लॉस रखो सर, स्टॉप लॉस। आप इतना समय रुकना ही नहीं चाहिए। वो क्विक एग्जिट वाला बटन पे हमेशा आपका पॉइंटर होना चाहिए। जैसे ही दिख रहा है आपके स्टॉप लॉस से दूर, आप वो क्विक एग्जिट करना ही पड़ेगा। अभी प्रॉब्लम जी क्या है तो ना, ये ऐसे बड़े बड़े लॉस लेने के बाद फिर आपको यूजुअल ट्रेडिंग स्टाइल और ग्रुप में आने के लिए कम से कम 2-3 हफ्ते लगेंगे आपको। जी वो 1 महीना तो लग ही जाएगा। हाँ, वो माइंडसेट आपका संभालने के लिए। एक तो आप, मैंने जो बोला था कि ये पहले आप कैपिटल डबल करो पोजीशन साइज बढ़ाने से पहले, आपने वो भी नहीं किया। कैपिटल डबल होने से पहले ही आपने पोजीशन साइज बड़ा कर दिया। मैंने तो एक लॉट ही बढ़ाया था, हाँ तो लेकिन पहले आप कितना लॉट से कर रहे थे? एक या दो लॉट से कर रहे थे ना आप? मैं सबसे पहले 2 लॉट से कर रहा था, अभी चार फिर हो गया उसके आपका। बाद अभी 4 हो गया। वही डबल हो गया ना आपका। तो मैं वही कह रहा था कि हाँ जब तक आपका कैपिटल डबल नहीं होता है, आप डबल मत करो ट्रेडिंग क्वांटिटी, क्योंकि ऐसे दिन की वजह से आप वापस एकदम से स्ट्रेट स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाते हो। देन जो 2 महीने आपने मेहनत किया है डिसिप्लिन के साथ, वो पूरा गया एक ही दिन में। हाँ। तो नहीं, कल जो मेरा लॉस हुआ था वो एक्चुअली ऑप्शन बाइंग में हुआ था, और वो भी 1800 क्वांटिटी था, इसीलिए वो तो इतना सर बड़ा लॉस दो हुआ। लॉट से बहुत ज्यादा है। वो करीब करीब कितना लॉट हो गया? वो 30 लॉट करीब हो गया, 25 लॉट करीब हो हाँ, गया। 25 27 लॉट। तो फिर कैसे सर? फिर आपने बोला था ऑप्शन बाइंग आप बंद कर रहे हो क्योंकि सूट नहीं कर रहा है, आप फिर से ऑप्शन बाइंग कर रहे हो। जी वो तो, वही तो गलती हो गया मुझसे। वही सर, जैसे जब तक ये आई मीन ये सुनने के लिए बहुत छोटे छोटे पॉइंट लगते हैं, बट सबकॉन्शियसली कंट्रोल नहीं होता है किसी का भी। जब तक आपको ये कंट्रोल नहीं आएगा, ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल नहीं होगा, आप कुछ भी कर लो। जी मैं आपने तो सर अभी डिसिप्लिन से काम कर रहा था, लेकिन एक बार आपने सोचा ऑप्शन बाइंग नहीं करना है तो नहीं करना है, खत्म। ऑप्शन बाइंग आप ये समझो कि वो आपके पास अगर डिस्पोजेबल पैसा है जो आप मार्केट को देना चाहते हो, तभी आप ऑप्शन बाइंग में जाओ। या फिर ऑप्शन बाइंग आप तभी करो जब आपका सेलिंग वाला पोजीशन प्रॉफिट में है और आप होल्ड करके स्विंग लेने की कोशिश करो, तब फिर दोबारा आप ऑप्शन बाइंग में देखो। मतलब एक बार आपने सेल किया और आपके डायरेक्शन में अच्छा खासा प्रॉफिट चला गया और आपको ऐड करने क्वांटिटी, फिर बाइंग में ऐड कर लो। बट प्लेन वेनिला ऑप्शन बाइंग नहीं, ऐसे मार्केट्स में तो नहीं। अगर मार्केट्स ट्रेंड कर रहे हैं और आपने खरीदा और वेट किया तो भी चलता है। ये तो ट्रेंड भी नहीं है, एकदम बीचों बीच है रेंज के। जी तो ऐसे टाइम में ऑप्शन बाइंग बहुत मुश्किल है। और वॉलेटाइल था कल का दिन। मैंने कल मॉर्निंग में भी बोला था कि बहुत रैंडम स्पाइक्स आएंगे, कहीं से भी पलटेगा, क्वांटिटी कम रखो। और आपने तो 25-26 लॉट के साथ किया है क्वांटिटी, मतलब बहुत बढ़ाया आपने। ये सब पोजीशन साइजिंग मेरा सही नहीं बैठ रहा था, इसलिए। हम्म, हम्म। वही है सर, वो 3-4 पॉइंट ये है बस। वो मतलब आपका वो सेकंड नेचर हो जाना चाहिए। मतलब कोई कुछ भी कहे, आप वहां से भटकना नहीं चाहिए बस। बाकी एनीबॉडी हैज एनी अदर क्वेश्चंस? लेकिन सर वो जो सेकंड नेचर आप बोल रहे हो, लेकिन वो कैसे बनाए, मतलब वैसा कंट्रोल कैसे आएगा, वही तो मैं बोल। सर वो तो करते करते आएगा, और कैसे आएगा वो? वही तो वही ऑलमोस्ट 1.5 महीने का प्रॉफिट चला गया है हम्म। कल। आप मानोगे नहीं, मेरा सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक 97% ऑफ द डेज मेरा सेम शेड्यूल रहता है। सेम टाइम सेम शेड्यूल। आप ट्रेडिंग छोड़ो, मैं नॉर्मल लाइफ के बोल रहा हूँ। वही टाइम पे उठता हूँ, वही चीज करता हूँ, वही टाइम पे सोता हूँ। बहुत रेयरली मेरा मतलब डाइवर्ट होता है कि मैंने प्लान, मतलब मेरा यूजुअल स्टाइल ऐसा है और मैं कुछ और ही जाने जा रहा किए जा रहा हूँ। नहीं, महीने में एक आध संडे या सैटरडे अगर आउट ऑफ द ब्लू कुछ करना का मन लगा तो अलग इवेंट होता है, नहीं तो फुल टाइम टेबल जैसा ही होता है मेरा पूरा जिंदगी। वो एक्चुअली ट्रेडिंग से पहले ऐसा नहीं था, ट्रेडिंग के बाद ही हुआ है, पता नहीं कैसे बट हो गया। जी एक बार सब कुछ डिसिप्लिन में आ जाए तो फिर तो आराम से काम बनता ही है। जैसे मैं डिसिप्लिन एग्जैक्टली, से काम कर रहा था, तो मंथ ऑन मंथ मेरा सही जा रहा था। एग्जैक्टली। और 1 2 दिन डिसिप्लिन ब्रेक हो गया तो फिर हो गया, यस। काम खत्म। और अभी तो कैपिटल थोड़ा सा कम है इसलिए, लेकिन अगर कैपिटल भी थोड़ा बहुत बड़ा होता तो कल बहुत बड़ा डेंट लगता। एग्जैक्टली। वही सर, आप बाइंग छोड़ दो, बाइंग के लिए टाइम आएगा। मैं डाल दूंगा कमेंट्स में, अगर किन्हीं मतलब हम जैसे सेलर्स को अगर बायर्स में कन्वर्ट होना है तो मैं कमेंट्स में डाल दूंगा कि यहाँ पे बाई कर लो, मोस्ट प्रोबेबली ब्रेकआउट हो जाएगा, होल्ड करो और वो सब। तब बाइंग करेंगे। बट अभी ऐसे मार्केट में ऐसे लेवल्स पे कोई फायदा नहीं बाइंग करके। जी मेरा तो सर सबसे अभी मेन जिस बाइंग में प्रॉब्लम है पोजीशन साइजिंग।
जिस हिसाब से मार्केट बिहेव कर रहा है मुझे लग रहा है मिड मार्च या एंड मार्च या फिर फर्स्ट कपल ऑफ वीक्स ऑफ अप्रैल एक डायरेक्शन पकड़ेगा मार्केट, देन विल कैप्चर दैट डायरेक्शन बाइंग करके। तब तक आप कंट्रोल रखो, कैपिटल रखो, थोड़े बहुत प्रॉफिट्स में आ जाओ, ताकि वो स्विंग पकड़ने के समय एक दो स्टॉप लॉस हिट भी हुआ फिर भी हम लोग से छूटेगा नहीं। नॉर्मली ऐसे होता है, स्विंग बड़ा स्विंग मिलने से पहले आपका एक दो डायरेक्शनल ट्रेड्स के स्टॉप लॉस खाएगा ही खाएगा मार्केट, फिर ही देगा। जैसे अभी अनूप जी का हुआ है, दो तीन बार खा चुका है। दैट इज अ वेरी जी। गुड इंडिकेशन कि मार्केट ट्रेंड होने वाला है एक ही डायरेक्शन में। अभी अभी ब्रेकआउट तो मुश्किल ही लग रहा है। नहीं नहीं, हो जाएगा, मुश्किल देखो हो आप, जाएगा। देखो हो हो जाएगा। जाएगा। हो जाएगा, दो हफ्ते की बारी है मेरे ख्याल से, 2 या 3 हफ्ते, दैट्स इट। हो जाएगा बिल्कुल। अभी वो ऊपर हो गया या नीचे अरे, होगा वो डिपेंड करता है, बट देन हो जाएगा बिल्कुल। अरे आपने जो बोला ना कि अभी मार्च एंड तक या अप्रैल तक वेट करो ऐसे, हम्म। तो वो मतलब साइकोलॉजी कैसा रहता है जो लॉस में है ना, उनका थिंकिंग यही रहता है कि अरे तब तक वेट करेंगे क्या, मतलब वेट एज इन वो लॉस उनको दिखता रहता है कि अरे मेरा 14 लाख का, सर 20 लाख मतलब का। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ना सर कि तब तक ट्रेड ही मत करो, मैं बोल रहा हूँ तब तक बाइंग के लिए वेट करो। बाकी हम लोग जो सेलिंग स्कैल्प करके छोटा छोटा कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं दिन भर। ये जो यस कल यस। सोमू सर ने किया कि 26 लॉट 27 लॉट एक मूव के एक्सपेक्टेशन में जो पकड़ा है उसके लिए टाइम है मार्च मिड या एंड तक। तब तक जो हमारा हम्म। रूटीन ब्रेड एंड बटर है वो तो चलता रहेगा। ओके ओके। नहीं, वही मेन मतलब साइकोलॉजी ये है कि उनको दिखता है कि लॉस अभी नहीं, मतलब जैसे भी फॉर एग्जांपल हाँ, आप, यस हम लोग यस प्रॉफिट में है, मतलब यस कि उसके ऊपर कुछ बर्डन नहीं है, यस तो वो कैसा करेगा कि चलो ठीक है आज मिला नहीं तो भी चलेगा मेरे को, मतलब मैं लॉस में तो नहीं हूँ। यस। बट वो लॉस वालों को कैसे कि अरे नहीं, अगर आज मतलब एक फॉर एग्जांपल किसी का 20 लाख का लॉस है, चलो आज का 15 हजार तो बनना चाहिए। हाँ, अगर वो एग्जैक्टली। 15 हजार उल्टा गवा रहा है ना, तो उसको दिखता है कि 20 लाख के ऊपर और 15 हजार चल गया, यस अरे ऐसे कैसे हो गया। तो यस। ये साइकोलॉजी थोड़ा इफेक्ट करता है। तो मतलब एग्जैक्टली। आप इतना मतलब ये मत करो, हो हाँ। जाएगा थोड़ा। मतलब सर जो बोलते हैं वो ब्लाइंडली फॉलो करना ही हमारे लिए बेटर है, क्योंकि एंड गेट एक समथिंग सोमू सर हम ने लोग को। बीच में एक और भी बोला था कि उनको तभी चैन आता है जब डे प्रॉफिटेबल हो। ये वाला फीलिंग हाँ निकालना बहुत मुश्किल है और बहुत जरूरी है। अगर आपको सबकॉन्शियसली ये लग रहा है ना कि प्रॉफिटेबल होने से ही मेरा दिन अच्छा है और लॉस होने से दिन खराब है, तो ट्रेडिंग नहीं सीख पाओगे आप। वो उसको जाने दो, लॉस गया तो गया, पैसे गए तो गए। वो जो मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, वो जो अर्ज रहता है ना कि दिन को प्रॉफिटेबल ही क्लोज करना है, वो वही ओवर यस ट्रेडिंग का रीजन है। यस। क्योंकि वो फॉलो ही नहीं किया ना सर, मंथली प्रॉफिटेबल उन्होंने, हम लोगों ने कभी मतलब जो भी लॉस मेकिंग ट्रेडर्स है ना, हाँ वो कभी फॉलो ही नहीं किए मंथली, उनके उनको समझ भी नहीं आता कि अरे मतलब आज चले गए पैसे, ऐसे कैसे हो गया है। दैट हाँ। थिंकिंग टेक्स ओवर एंड वो ओवर ट्रेडिंग हम्म। या ऐसे इसमें जाता है। हम्म। क्योंकि तो उन्होंने मैंने कभी, सर एक हम रूल लोगों ने बनाया कभी। है। मैंने एक रूल बनाया है कि मंडे से मैं दिन का दो ही ट्रेड करूंगा, चाहे वो प्रॉफिटेबल हो या लॉस में हो। अभी देखते हैं कितना दिन तक सर फॉलो कर अभी पाते हैं। अभी आप कितने दिन से ट्रेड कर रहे हो, मतलब कितना टाइम हो गया आपको ट्रेड करते हुए? 3 साल हो गया था। 3 साल। तो अभी तक तो आपको एक या दो ऐसे पैटर्न आइडेंटिफाई किए ही होंगे आपने कि वो पैटर्न आने से पक्का पैसा बनता है। आपका ऐसा कोई पैटर्न है? जी, मुझे एक पैटर्न पता है कि जहाँ पे मुझे लॉस होता है, वो पैटर्न मुझे पता है। बोथ नहीं साइड जब मोमेंटम सर, करता है उस लॉस वाले वो पैटर्न नहीं सर, प्रॉफिटेबल पैटर्न पूछ रहा हूँ आपसे। जी, वो सर तो भाई उल्टे कॉल की ट्रेड करो। पोजीशन है तो पुट की पोजीशन ले लो सर, कुछ मत करो दूसरा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मेरा मैक्सिमम डेज ही अच्छा ही जाता है। कभी कभी होता है कि एक दो ऊपर नीचे हो जाता है, तो फिर मेरा स्टॉप लॉस बोथ साइड हिट हो जाता मैं क्यों पूछ रहा हूँ सर, जब इनिशियल डेज में मेरा ऐसा होता था कि ओवर ट्रेडिंग हो गया और बहुत बड़ा लॉस हो गया, तो मैंने इवेंचुअली ये रियलाइज किया कि जब तक वो पैटर्न नहीं दिखेगा मैं ट्रेड नहीं करूंगा, मतलब वो प्रॉफिटेबल वाला। क्योंकि एक दो पैटर्न्स मेरे को अभी बाय हार्ट हो गए, वो जैसे ही दिखते हैं मैं ट्रेड करता हूँ, भले स्टॉप लॉस गया तो गया, बट आई विल डेफिनेटली ट्रेड। तो ऐसा अगर एक तो कोई पैटर्न आपने रिकॉग्नाइज किया हो और आप एकदम कंफर्टेबल हो उससे, तो जब तक आपका माइंड सेट नहीं होता है आप वही पैटर्न पे ट्रेड करो। बाकी नहीं आया तो वो दिन में मत ट्रेड करो, वो दो ट्रेड भी नहीं, एक भी नहीं। दैट इज अ वेरी गुड वे ऑफ कमिंग आउट फ्रॉम दिस सेटबैक दैट यू हैव हैड, कि एक या दो पैटर्न जो आपको परफेक्टली पता हो कि इससे होता ही होता है। जैसे मैं मेरे मेरे एक दो पैटर्न में बताता हूँ। तीन कैंडल, 3 15 मिनट के कैंडल अगर ऐसा रिजेक्शन दे रहा है एक ही लेवल पे, हाँ ये देखिए आप, ये जो रिजेक्शन देख रहे हो, 1 2 3 ऊपर से वीक मार रहा है एक ही लेवल से, 3 15 मिनट के कैंडल।
नेक्स्ट जब भी ये वाले एक या दो कैंडल के लो ब्रेक करता है, मैं हमेशा एंटर करता हूँ, वो हमेशा फॉलो ऑन देता है। ये एक पैटर्न हो गया। दूसरा, 15 मिनट में अगर आपने एक रेंज देखा, वो रेंज को तोड़ा और तुरंत रिजेक्शन मारा और नीचे से वो तोड़ रहा है, वो वाला पैटर्न। वो एक दो पैटर्न वो ऐसे 100% मतलब प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी के पैटर्न है, वैसे मिल रहे हैं और आपको वो आइडेंटिफाई कर रहे हो आप, तो उसी पे ट्रेड करो एक एक डेढ़ हफ्ता, तो जी वापस सर। आपका माइंडसेट ठीक हो जाएगा। सर ये थर्सडे वाला 19th का आप देख रहे हो, ये कि गैप अप होके फिर सीधे जो हाँ, कैंडल्स सेलिंग। ये दो हाँ, तीन, ये भी तो हाँ, एक पैटर्न, मतलब ये देखने में बहुत बार हुआ है कि हाँ, गैप अप ओपनिंग एंड देन सीधे रेड कैंडल्स। हाँ। यस, ये पैटर्न हुआ सर, बट मेरा उस दिन कैसा था, मेरा माइंड में था कि आज पॉजिटिव डे होने वाला है, मतलब रिवर्सल मारेगा, एक्सपायरी का दिन है तो पक्का रिवर्स आएगा आएगा राइट। करके ही था। तो हाँ एग्जैक्टली। हाँ एंड एक नहीं बार नहीं, ये वाला नहीं, लेकिन यूजुअली मतलब बाकी दिन यस हो तो यस ये भी यस यस, मतलब दिस आपको दिस इज अ लगता है वेरी ये गुड। होता है ना, खैर। हाँ, हाँ। यस। तो ये मोस्टली एक्सपायरीज पे होता है सर, मतलब वो कुछ हाँ, बिना इसके ही हो जाता है, नीचे आ जाता है। हाँ, हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं करते, बट आते ही जाता है, आते ही जाता है। हाँ। तो मैंने मॉर्निंग कमेंट में भी यही दिया था कि यहाँ के आसपास जो लेवल है वहां पे सपोर्ट आएगा, तो यहाँ पे जब रिवर्सल लेने की कोशिश कर रहा था, मैंने एक ट्रेड लिया, जब वो तोड़ के नीचे गया फिर मैंने बोला छोड़ दो, हम्म। फिर उसके बाद ट्रेड नहीं किया। पहले भी मैं बोला था ना वो सर, स्कैल्पिंग में बेस्ट स्कैल्पिंग में ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल नहीं है कि आपको ट्रेड कब करना है, स्कैल्पिंग में ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कि आपको ट्रेड कब नहीं करना है, क्योंकि स्कैल्पिंग में हर 15-20 मिनट में आपको एक पैटर्न दिखेगा। जब तक आपको वो क्लैरिटी नहीं आता कि कौन सा ट्रेड छोड़ना है और कौन सा पकड़ना है, स्कैल्पिंग पैसा लेते ही रहेगा। सर ये Initial 9:15 candle, first to 5 minute candle, no? How हाँ, from that, how you find the trend? मतलब first to 5 minute candle देख के. ओके, आई मीन आई विल नॉट से आई विल फॉलो अ ट्रेंड, बट व्हाट आई डू इज दिस, लाइक फर्स्ट 5 मिनट कैंडल्स में अगर आप देखोगे, आई यूज दिस इंडिकेटर वाला। नाउ हाउ आई टुक इट, आई टेल यू। हाँ, तो फर्स्ट 5 मिनट्स में अगर आप देखोगे, अरे, हाँ, तो दिस पीओसी वाज समवेयर क्लोज टू हियर। नाउ लुक एट दिस एट द एंड ऑफ द सेकंड कैंडल, पीओसी यहाँ पे ऊपर शिफ्ट किया एंड देन इट स्टार्टेड टेकिंग रिजेक्शन। तो दिस वाज माय बेस फॉर फ्राइडे ट्रेड, लाइक पीओसी यहाँ से ऊपर गया और यहाँ से रिजेक्शन गया, मतलब वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ा एंड देन इट हैज रिजेक्टेड, दैट मींस सेलिंग आया है यहाँ से। Where is that PUC line? ये वाइट वाइट, दिस वाइट लाइन, यू सी स्मॉल वाइट लाइन। Is it a volume fixed volume that हाँ, दिस PUC? इंडिकेटर इज फिक्स Oh, वॉल्यूम इंडिकेटर। oh, okay, okay. So at the end of the second candle, not even at the end, in the middle of the second candle, when I saw POC jumping from here to almost day high, and then there were two rejections from that same particular level, I entered here, just looking at POC, nothing else. That means that is the point where the most trade had happened. Ah, Means volume has spiked. Yeah. So that is the uh, point where volume has come in, and just after the volume has come in, it started rejecting. Matlab the volume which has come in, it's a selling volume. selling. Okay. Actually, from that we don't know whether it is a selling or buying. We No. only know about the total volume, right? Ah, yes. So the only inference is volume has spiked here, and just after the spike of this volume, it has rejected. That means that is a selling volume. Okay, okay, okay. Then I shorted here. Now, why I got out was this candle, although it closed just below day's low, if it had intention to continue, it will, this candle will not be in green at all. Just after the first tick, it should continue. But since it didn't continue, I got out. So they purposely pull down and then go up. Before going up, they're purposely pulling down and then going up. Isn't I it mean, that? we cannot say that. What we can say is, at the break of this day low, many people might have entered, considering previous day low break ho gaya, it will be a trending candle and all that. So they wanted to capture this particular liquidity before going up. यहाँ पे बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस होगा, न्यू एंट्रीज होंगे, दे वांटेड टू कैप्चर ऑल दैट एंड देन दे टुक इट अप। एंड ऑल दिस ब्लू लाइंस दैट यू गाइस आर सीइंग, these are all POCs only, different days different POCs, until unless they are not violated I don't remove those, like previous POC was here, it didn't violate, आया और निकल गया ऊपर, the But second, the triangular figure is not there. No, only POC is there. No, if you select that fixed volume, it will show हाँ, all the like. so I have select fixed range volume,
It will be something like this. Okay, okay, okay. After that, you are removing that For that blue day, and yellow. for that day I'll remove. But wherever this POC is, I usually draw a line for the next coming 2 or 3 Okay, days. okay, 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 okay. So it will actually help. Now, if you see this POC was coming from way back, these 2 days, and this Okay, POC okay, acted okay. as a support on Monday and acted as a support on Friday also. So two supports. Now this level is super strong because 4 days it has acted as supports. Okay, okay, okay. Similarly, this resistance. Now it previously whenever the price came to this POC, it got immediately rejected. So this is also a strong POC level, 25,834. When the market reverses, we have to immediately go for the market limit or limit order or market limit. How you immediately change the? All my orders are market. Oh, okay, okay. So Nothing cannot on. wait for the limit order, right? No. Options limit order very rarely will be able to execute. All markets. And the other thing is my volume, the amount of lots that I sell, and by limit, most of them I will not be executed on. By the time it will finish the green candle, it Yes. will go up. Okay, Yes. okay. But So, but speaker, इसमें तो you are selling naked only, right? Not doing any spread, no? no, I sold in the money call and then bought अच्छा, okay, deep okay. out of the money for margin. Is it. Now again we'll open right near this POC. The APOC, whether it will reject or whether it will go up, we'll see tomorrow. Those other three lines are like CPR, CPR what? That white This line. white lines are CPR auto. Yeah. Okay, okay. मुझे लगता है कि गैप अप सस्टेन नहीं करेगा, मतलब मोस्टली मुझे गैप अप का भी थोड़ा डाउट लग रहा है, क्योंकि जो ट्रम्प का, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ना, जब यूके और हमारा ट्रेड डील हुआ था, तो हम लोगों ने नोटिस मतलब ये किया था कि वो लेफ्ट आउट फील कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो डील साइन करेगा। तो इनडायरेक्टली उसने इंडिया के साथ किया था। अभी भी वैसा ही उसका, मतलब वो गुस्सा चढ़ा हुआ है उसके ऊपर, एंड ही इज इन एंगर नाउ कि उसका खुद का कंट्री का लोग उसका रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो इलेक्शन में उसको मतलब ये होगा। तो मुझे लग रहा है कि मोस्टली ईरान का अटैक, तो थोड़ा थोड़ा तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा उसको, तो उस वजह से थोड़ा निगेटिव मेरा सेंटिमेंट लग रहा है। बाकी एंड पता नहीं अभी उसका। वो ईरान सी में तो रशिया और चाइना भी पहुंच गए ऑलरेडी। नहीं यार, वो तो उनको आना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर चाइना का तो कंपलसरी आना पड़ेगा, क्योंकि उसके तो ऑप्शन ही बंद हो गए और के। बट रशिया पता नहीं क्यों नहीं है, क्यों आया है वो, यूक्रेन ही नहीं ले पा रहे अभी तक ईरान में हेल्प करने आ गए। हाँ, क्या पता। सर अपना अर्निंग सीजन भी तो अब चालू होगा नहीं? कब कब था? खत्म हो जनवरी गया ना सर, खत्म हो गया ना। खत्म हो गया। पिछले क्वार्टर खत्म हो गया, अभी नेक्स्ट कोई अप्रैल फर्स्ट वीक में कभी आ गया। अब तो कोई ट्रिगर नहीं है मतलब। कुछ ट्रिगर नहीं है, बस ट्रम्प ही है बड़ा ट्रिगर। बाकी लास्ट फेड मीटिंग्स में दे सेड कि फर्दर रेट कट्स आर डिफिकल्ट, तो वो एक हो सकता है। जैसे ही ये पॉवेल जाके जो दूसरा वाला आने वाला है फेड चेयरमैन, that fellow, what everybody is expecting is all his measures and policy decisions will be to strengthen dollar. अगर ऐसा होता है तो खत्म, emerging market खत्म, गोल्ड सिल्वर खत्म, सब खत्म। That might be a turning event, जो नया फेड चेयरमैन ज्वाइन होने वाला है। अदर देन दैट देयर इज नथिंग। हमारा आरबीआई भी अभी क्या है, वो फालतू में रेट कट कर रहा है, उस ट्रांसमिशन तो हो नहीं रहा है। अभी भी गवर्नमेंट वही रेट्स पे बोरो कर रहा है। बस हम लोग के लिए होम लोन्स और कार लोन सस्ते हो गए, बट मैक्रो लेवल पे कुछ कम नहीं हो रहे इंटरेस्ट रेट। तो देर माइट बी ए केस कि आरबीआई भी बढ़ाए एक ये बोल के कि नहीं हो रहा है। सर कल का डेटा क्या था? डीआईआई ने बाइंग करी है। डीआई ने खरीदा, एफआई ने बेचा। एफआई तो बेच ही रहा है, वो कहाँ खरीद रहा है यार, देखिए। बट द थिंग इज दे कवर्ड अगेन। जो थर्सडे को जो जो शॉर्ट्स ऐड किए थे, द सेम अमाउंट ऑफ शॉर्ट्स, ऑलमोस्ट द सेम अमाउंट दे हैव कवर्ड ऑन फ्राइडे। एंड स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग किया है वापस, बट कैश में तो बेचा ही है 935 करोड़।
नो, ऑप्शंस में भी अगर आप देखोगे तो दे आर बायर्स इन बोथ कॉल एंड पुट। ये लोग सेल करना छोड़ ही दिए है, बाई कर रहे हैं कब से। तो हम रिटेलर ही है सब। रिटेलर देखो, कॉल भी सेल किए हुए हैं, पुट भी सेल किए हुए हैं। सर आप क्रिप्टो में भी एक्टिव हो क्या? नहीं सर, नहीं, मैंने बोला था ना सर, वो 24/7 वाले इसमें मेरा बहुत स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है, कंट्रोल नहीं होता है, तो छोड़ दिया मैंने। अभी उसके बदले तो नैस्डैक ही सही है। इनफैक्ट में बहुत सर यार अच्छा मूव लास्ट आता है। So shall we close guys or anybody else? Yes, sir, we can close. Thank you. Yes, sir. Okay, okay sir. Thank you, thank you. Let's meet थैंक यू on. Thank सो you, sir. मच। Happy weekend, Bye, all bye. of you. बाय।